Good afternoon. Today's topic is fracture complications. Fractures complications, these are associated pathologies other than the loss of bone continuity which either coexist or originate due to fracture. Fracture की definition कौन बताएगा? सुमेर बता। किसकी? बोन की? आप बताओ। हाँ ओके। An early diagnosis and aggressive treatment is necessary to minimize the disabilities. Fractures complication is classified into three: immediate, early and late. First of all we will talk about immediate. Systematic complications fractures की कौन कौन बताएगा? बताओ, आप ही बताओ। बोलो। हाँ ठीक है। और ठीक है। हाँ दोस्त बताओ। सीधा कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तेरे हिसाब से फ्रैक्चर हुआ ना तो क्या होगा? तो पेन तो कॉम्प्लिकेशन से मत बताओ यार। ब्लड लॉस होगा, है ना? पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जाएगा, है ना? अंडरस्टूड है ना ये चीज? तो सिस्टमिक में वी विल हैव हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, लोकल में इंजरी टू द मेजर वेसल्स, मसल्स एंड टेंडन्स, जॉइंट्स एंड विसरा। Then early में systematic में we can have hypovolumic shock, ARDS, fat embolism, DVT, aseptic traumatic fever, septicemia, crush syndrome and tetanus. Local में we can have infection and compartment syndrome. Fat embolism हो जाओ, बताओ क्या होता है? कौन बताएगा फैट एम्बोलिज्म? कोई भी बता दो यार। नहीं किसी को नहीं पता फैट एम्बोलिज्म? बता दोस्त। किसमें? बता यार, बोल। वेसल्स में कौन सी लॉन्ग बोन? मेजर कौन सी? फीमर। ठीक है। देन लेट कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू इम्परफेक्ट यूनियन, अंडरस्टूड? डिलेड यूनियन, नॉन यूनियन, मैल यूनियन एंड क्रॉस यूनियन। अदर्स आर एवेस्कुलर नेक्रोसिस, शॉर्टनिंग, जॉइंट स्टिफनेस, सुडेक डिस्ट्रॉफी, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ischemic contracture, myositis ossificans or osteoarthritis. First of all we will discuss about hypovolumic shock. Early recognition, immediate resuscitation is of successful management. Cause of circulatory shock is decreased cardiac output, it can be due to hemorrhage, obstructive shock, mechanism obstruction like pneumothorax, cardiac tamponade or pulmonary embolism. आगे आ जाओ दोस्त। Then decreased peripheral resistance, distributive shock, endocrine shock due to reduced tissue perforation, perfusion in crisis from hypothalamic, adrenal insufficiency, तो ठीक है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कौन एक्सप्लेन करेगा? ये तो सब पढ़ा हुआ है यार, बताओ। more than 1 to 1.5 liters ज्यादा अगर ब्लड लॉस होता
तो ही होगा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। आप बताओ लास्ट। कितना क्लासिफिकेशन है ना हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की? स्टेज 1 20 to 30 या लेस देन 15? आप बताओ, खड़े हो जाओ। ब्लू। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक तो ही होगा। बैठो। Hypovolemic shock, commonest cause of death in multiple fractures of major bones with internal hemorrhage, like femur and pelvis. फीमर में यूजुअली 1.5 लीटर होता है जो आप बोल रहे हो, और पेल्विस में 2 लीटर्स का। Causes may be external or internal hemorrhage. External may be compound fractures injuring major vessels of the limb. Internal may be due to body cavities, chest or pelvis. Internal is obviously more difficult to diagnose. Slogan is bleeding onto the floor and 4 more. Okay, ठीक है। ये तो पढ़ा है ना सबने? बताओ दोस्त, बताओ। नहीं पता? बोलो खड़े हो, बताओ क्या समझ के आ रहा है? लिखा है ना सामने। तेज, लाउड। खड़ा होके बता दो। एक्सटर्नल ब्लीडिंग को चेस्ट से, एब्डोमेन से, पेल्विस में। ओके। ब्लड लॉस। फीमर से कितनी होती है यूजुअली? 1.5। लास्ट ग्रीन शर्ट, फीमर फ्रैक्चर में कितना ब्लड लॉस होता है? कितना? पेल्विस में? सामने लिखा है। This is the hemorrhagic assessment that you are. Class 1 less than 15%, loss of blood, no tachycardia, normal BP. Class 2 is 15 to 30%, blood loss, tachycardia more than 100, obviously normal BP. Class 3 is 30 to 40%, 2 liter blood loss, tachycardia, hypotension and tachypnea. Class 4 is more than 40%, more than 2 liter blood loss, severe tachycardia that is more than 140, severe hypotension, मिनिमल यूरिन आउटपुट। ठीक है। कौन था जिसने मोर देन 1.5 बोला था? इधर था ना कोई? दोस्त खड़े हो जाओ, बताओ स्टेजेस बताओ। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। अरे यार अभी तो बताइए, एक तो बता दे प्लीज। हाँ क्या हो गया? क्या हुआ? एक तो बता। मिनिमम कितना लॉस चाहिए स्टेज 1 के लिए? 1 लीटर। परसेंट में बताएगा कि 1 लीटर बताएगा? बताओ। ठीक है ठीक है, ये स्टेज 1 हो गई। आप खड़े हो जाओ, स्टेज 2 बताओ।
है टाइम, 15 से 30. ठीक है बैठ जाओ. Now the management of hypovolemic shock starts even before the cause is established. 2 large bore IV cannulas put, cut down if peripheral vasoconstriction is present, infuse 2 liter of crystalloids, ringal lactate followed by colloid. Then NICE, National Institute of Clinical Excellence UK guideline of pre-hospital initiation of fluid replacement therapy in trauma recommends 250 ml bolus crystalloid fluids till the radial pulse returns. After fluid correction, therapy drugs may be required: vasopressors, norepinephrine, inotropes, dobutamine. Then localize the site of lesion if in body cavities, chest, perform chest aspiration, abdomen, diagnostic parietal lavage, peritoneal lavage, pelvic में clinical examinations and limbs में X-ray confirmation. Chest bleeding तो ICDT. Abdominal bleeding, then laparotomy. ARDS, ARDS तो पढ़ा होगा. नहीं पढ़ा? बता, जल्दी बताओ यार. किसके बाद? अच्छा चलो, क्या होता क्या उसमें? ट्रॉमा के बाद तो हो गया, चलो बहुत कुछ हो गया. फिर अच्छा, तो ARDS हो गया. The onset is usually after 24 hours of trauma. This may be the initiation of or first organ failing in modes, multi-organ dysfunction syndrome, cause not definite. Release in inflammatory sensitized. Features of ARDS is tachypnea, labored breathing, X-ray diffused pulmonary infiltration, partial pressure of O2 below 50. ठीक है? And hypoxia and hypercarbia resulting in peripheral tissue hypoxia. ARDS management: 100% of O2 assisted ventilation. It takes up to 7 days to get the chest clear. If not detected early, death occurs in multi-organ dysfunction syndrome or cardiorespiratory failure. Then the fat embolism. It is a life-threatening complication of fracture where fat globules occlude the small blood vessels. Fat globules of 10 microns and larger are often seen in circulating blood after close fracture of long bones in adults. Only in a few of them symptoms develop. Embolism is the process of occlusion of small blood vessels by fat material which is brought to the site of elsewhere by bloodstream. बता. ठीक है भाई, खड़ा हो जा. हाँ हाँ, तू ही एप्रन वाला यार, तू ही ना. हाँ पता है तुझे, तेरी बात हो रही है. बता, बैठ. अरे इधर, मैं तो इधर हूँ. वहाँ क्या है? हाइपोवॉल्यूमिक शॉक. मास्क उतार दो. बता, स्टेजेस कुछ पता है? हाइपोवॉल्यूमिक शॉक पढ़ा है ना अभी तो तूने? नहीं पढ़ा? बैठ. Pathogenesis: fat globules are released from the bone marrow of large tubular bones into bloodstream, or alternatively fat can also be released from the adipose tissues. These fat globules obstruct capillary vasculature in the brain, all lungs or eyes or any other organ. Fat is converted to free fatty acid which induces toxic vasculitis followed by thrombosis. Clinical criteria for fat embolism is pulmonary type tachypnea, tachycardia, respiratory failure, then drowsiness, restlessness, coma. Fat embolism diagnosis: suggestive clinical features:
Anterior axillary. Petechial rashes on anterior aspect neck, anterior axillary folds, anterior chest wall, or retinal artery embolism. Ophthalmoscopy, retinal artery emboli, exudates, hemorrhage, sputum fat globules, urine fat globules. Chest X-ray, pulmonary infiltrates, snowstorm appearance. Management is respiratory support, IV low molecular weight dextran, corticosteroids, 5% dextrose and 5% alcohol in infusion to emulsify fat. बताओ ऑरेंज शर्ट फैट एम्बोलिज्म बेसिकली ये होता है कि जो बोन मैरो में जो भी अपने फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो डिस्लॉज हो जाते हैं। डिस्लॉज होकर वो छोटी कैपिलरी या वेस्कुलर कैपिलरीज को इन्वॉल्व करके उसको एम्बोलिज्म कहते हैं। क्यों होता क्यों है? बिकॉज जैसे ही वो फैट है वो प्री ट्रांस फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा जिसकी वजह से वेस्कुलाइटिस हो जाएगी, जिसकी वजह से कॉग्निटिव कोअगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसका ट्रीटमेंट अपन या तो अपन डेक्स्ट्रोल इमल्सिफाई कर सकते हैं अल्कोहल और डेक्स्ट्रोल और अल्कोहल लगा के लो मॉलिक्यूलर वेट डेक्स्ट्रोल अपन दे सकते हैं। वेरी गुड, भाई बताएगा, बता। फैटी एसिड ही लॉज हो गया। बाकी ठीक है। बैठ जाओ। DVT and pulmonary embolism. It is a common complication originating from altered hemodynamics in lower limb fracture and spinal injuries. More common in aging population, obese people, and previous history of thrombosis. Pathology: virchostride, decreased blood flow, decreased flow rate of the blood, damage to the blood vessel wall, and hypercoagulopathy. ट्रॉमा होगा, उसके बाद इमोबिलाइजेशन होगा, देन वेनस स्टेसिस होगा एंड देन थ्रोम्बोसिस. पैथोलॉजी: थ्रोम्बोसिस ऑफ लार्जर वेन इन थाई proximal to knee is more prone to break and thrombi fragment travels proximally to cause symptomatic pulmonary embolism or fatal pulmonary embolism. Clinical features: elderly and obese patients are at risk. Mild fever, tachycardia. On examination you will get leg swelling, local tenderness will be present, calf tenderness, pain in passive dorsiflexions, Homan signs. Venography shows DVT. DVT and sequel: fat pulmonary embolism. The venous thrombus can get dislodged and produce embolism in lungs. The condition is life-threatening. Embolism usually occurs within 4 to 5 days after injury. Post-thrombotic syndrome, a late complication of DVT, is PTS, which can manifest itself as edema, pain, or discomfort in the leg with skin problems. Other causes of DVT are surgery, hospitalization, immobilization, smoking, obesity, aging, pregnancy. Diagnosis done. Treatment: complete rest with elevation, compression stockings, intermittent pneumatic compression devices. Then we have chemical methods: aspirin, heparin, warfarin, low molecular weight heparin. Oral medication: 10A inhibitors, direct thrombin inhibitors. DVT. क्या कभी नहीं सुना? कैसा होता है? अच्छा लगता है सुनने में? फिर सीधा पक्का यही है DVT? अच्छा पढ़ ले बैठ. Crush syndrome. Crush syndrome is a syndrome that results from following extensive crushing injury of muscles resulting in systemic manifestations.
may be seen in polytrauma cases but typically in casualties from natural disaster like earthquake or mining accidents after being trapped under fallen masonry. Similarly, also seen in negligent cases where tourniquet has been kept inflated beyond permissible limits. May also result from injuries by sharp object by bone fragments. Example, supracondylar fracture of humerus. Crush syndrome, it is a reperfusion injury appearing after the release of crushing pressure. This results from the release of myoglobin, potassium, phosphorus, all products of rhabdomyolysis. बताओ. क्या होता क्या उसमें? और अच्छा, बैठ. Pathogenesis, crushing of muscles for 3 to 4 hours or more can result in degradation products like myoglobin to enter into circulation, a nephrotoxic product. Myoglobin after reaching kidney precipitates in renal tubules causing acute tubular necrosis and metabolic acidosis. Potassium release, that is hyperkalemia, can cause sudden fatal cardiac arrhythmias. So a trapped person with adequate analgesia control appearing normal and talking after extrication may suddenly collapse and die. Sudden decompensation, also called smiling death. आगे समझ. वाइट. हाँ तो बताओ. लाउड बोलो, बोलो, तेज बोलो. होता क्या है? अच्छा, नेक्स्ट वन. कुछ तो सुना ही होगा. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. क्या अभी तक क्या पढ़ा वो बता दे. चल एक टॉपिक कोई भी, कुछ भी बता दे वरना एब्सेंट खाएगा, बाहर जाएगा. एक चीज बतानी है बस तेरे को अभी तक में. हाँ, कौन सा? हाइपो टेंसिव. क्या बस तो उसका एक लाइन तो बता दे, कुछ तो पता होगा उसके बारे में. क्या हो जाता है? गुड. Clinical features may appear within 2 to 3 hours of injury. Local signs of crush injury of limb: massive swelling, bleeding, crushed muscles, absent distal pulse. Signs of deficient renal function is oliguria, scanty urine. Systemic signs: cardiac arrhythmias and failure, hypothermia, restlessness, delirium and shock. Treatment is tourniquet time limit. Application of tourniquet and gradual release of slowly allow the myoglobin to reach the kidneys. Adequate treatment for associated shock. Cardiac monitoring and electrolyte monitoring to prevent fatal arrhythmias. Treatment of acute renal failure. भाई खड़ा हो जाओ. बता क्या पढ़ रहे थे अब तक? और फ्रैक्चर्स. यार ऐसे मजाक मत कर, फ्रैक्चर्स तो मैंने ही नहीं पढ़ा अभी.
कॉम्प्लिकेशन ऑफ कुछ, बैठ जाओ, हवा का। Definition: non-union established when a minimum of 9 months has elapsed with no healing progression for 3 consecutive months. Practically a fracture that has no potential to heal without further intervention. Causes of non-union can be poor vascularity, instability, infection. Classification: site diaphyseal, metaphyseal, extra-articular, intra-articular. रोज खड़ो, मतलब डायफाइसिस, मेटाफाइसिस, एपीफाइसिस का। अच्छा, बीच का, फिर रह क्या गया? मेटाफाइसिस रह गया। ये क्या है? लास्ट वन बताओ। फिर नीचे वापस से मेटाफाइसिस, वापस से एपीफाइसिस। ठीक। मैनेजमेंट, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट। बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन इंजेक्शंस, bone marrow injections, ultrasound stimulation, electrical stimulation, extracorporeal shockwave therapy, parathyroid hormone, indirect interventions, that is cessation of smoking, control of diabetes, metabolic disorders, maintaining nutrition, avoid NSAIDs, steroids, immunosuppressive agents. Malunion. This means that the fracture has anatomically malunited with angulation, rotation or overriding of fragments. This is due to failure to reduce the fragments into proper alignment or failure to hold them in a position till union. बताओ नॉन यूनियन मैल यूनियन में डिफरेंस। सब पे ही ऐसे ही हो गया ना। हाँ, नॉन यूनियन। Clinical features of malunion: the patient presents with a deformity at the fracture site. It commonly occurs at the shaft of long bones, that is forearm, femur, tibia, or at the end of bones. Example: supracondylar fracture humerus, Colles fracture. Radiology will show the degree of angulation, rotation or overriding of the fragments. If the deformity is minimal and the function of the limb is satisfactory, the malunion can be accepted. In young children, malunion tends to correct itself by the remodeling at the fracture sites. If the deformity is gross or functional disability is marked, malunion is surgically treated by osteotomy, realignment and internal fixation. Treatment can be non-operative, can be operative. Non-operative can be ultrasound, electric stimulator, bone marrow injections. Surgical treatment can be fibular osteotomy, bone graft, plate osteosynthesis, intramedullary nailing and external fixation. थैंक यू। तो हो गया, बहुत टाइम है।